LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Good evening, listeners, and welcome to this weekend edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2342 1050 and 2331 and if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह हम आज आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक या स्टॉक मार्केट से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23421050 और 23314444। हमारे साथ प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वित्त विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं एस रंगभाष्य। Thank you, Amrish. The top stories. Domestic equity markets snaps 7-week rally. BSE Sensex sheds 0.52%, while Nifty 50 declines 107 points. In the US markets, Wall Street is counting on the Santa Claus rally to bring record highs. All three major averages notch their 8th positive week in a row. And oil prices eased ahead of the long Christmas holiday weekend. Brent futures fell 32 cents, while US West Texas Intermediate lost 0.5%. घरेलू शेयर बाजारों में 7 सप्ताह से चली आ रही बढ़त थमी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.52% और निफ्टी 107 अंक तक गिरा। अमेरिकी बाजारों में वॉल स्ट्रीट में क्रिसमस के मौके पर रिकॉर्ड ऊंचाई दिखाई दी। सभी 3 सूचकांकों में लगातार 8वें सप्ताह बढ़त दर्ज की गई और तेल के मूल्यों में क्रिसमस अवकाश सप्ताह से पहले कमी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल 32 सेंट गिरा, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। और अब आज की पहली खबर। देश के शेयर बाजारों में 7 सप्ताह से चला आ रहा तेजी का दौर इस सप्ताह थम गया और बाजार 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। बावजूद इसके बाजार ने 22 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में नई ऊंचाई को छुआ। दुनिया से आ रहे मिले जुले संकेतों और देश में कोविड के मामलों के बढ़ने के खतरों के बीच बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सप्ताह के अंत में 376 अंक यानी 0.52% गिरकर 71,106 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 107 अंक यानी 0.49% की गिरावट के साथ 21,349 अंकों पर आ गया। बाजार में 20 दिसंबर को नई ऊंचाइयों को छुआ, जहां सेंसेक्स 71,913 अंकों पर जा पहुंचा, वहीं निफ्टी 21,593 अंकों पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में मुंबई शेयर बाजार के मिड कैप सूचकांक ने सप्ताह के दौरान 36,483 अंकों के नए स्तर को छुआ। हालांकि सूचकांक लगभग 1% तक नीचे आ गया।
बंबई शेयर बाजार का स्मॉल कैप सूचकांक भी 42,648 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा, लेकिन सप्ताह के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो निफ्टी के अनेक क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3%, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 2%, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.4% और निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% गिरा। दूसरी ओर निफ्टी एफएमसीजी और फार्मा सूचकांकों में 1% की बढ़त दर्ज की गई। Well, let's start taking phone calls, and joining us first this evening is Yogesh from Delhi. Good evening, Yogesh, and welcome to Market Mantra. नमस्कार, शुक्रिया आपका। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि ये सेंटर रैली के बारे में हम लोग सुनते हैं हर बार क्रिसमस के आसपास। क्या मैं जान सकता हूँ कि सेंटर रैली किस कारण से आती है और क्या ये इंडियन मार्केट पे असर करती है या ये बाहर की कंट्री पे ज्यादा असर करती है? और मैम एक सवाल ये भी था कि इक्विटी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, क्या इनको आप अपना पहला सवाल में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सेंटा दिल्ली सेंटर रैली के बारे में सुनते हैं, इसका कारण क्या है? Santa Santa रैली। सेंटा रैली, ओके। दूसरी आपने क्या बात कही? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल ये है, क्या इनको निवेश की पहली सीढ़ी की तरह देखा जाए, सिर्फ इक्विटी में जाने का एक तरीका माना जाए, या फिर ये अपने आप में संपूर्ण निवेश होते हैं? ये देखिए, जब आप सेंटर रैली की बात कर रहे हैं तो ये यूजुअली क्रिसमस के दौरान जो स्पेसिफिक परचेजेस होती हैं उसकी बात की जाती है, और क्योंकि ये मार्केट में एक बढ़त देती हैं इसीलिए इन्हें एक सेंटर रैली की तरफ देखा जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट्स बढ़ती हैं वो एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाती हैं। दूसरा, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें या किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करें, आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप निवेश कर सकते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है और काफ़ी सारे कंपनीज़ में निवेश करेगा, एक पोर्टफोलियो बनाएगा और उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको। अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी ऑप्शन एक मिल सकता है, अगर आप डेट में निवेश करना चाहते हैं तो डेट ऑप्शन मिल सकता है, अगर दोनों में निवेश करना चाहें तो दोनों मिल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे थीम बेस्ड भी होते हैं और भी तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पर इनका मूल्य रूप में उन रिटेल लोगों को फ़ायदा होता है, एक तो जो प्रोफेशनली खुद बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं अपने फंड्स का। राइट। और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता जयपुर से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद मैडम। ये बताइए, जो अभी एडवर्टीजमेंट दिया गया एनपीएस के बारे में, तो टायर 1 अकाउंट तो समझ में आता, लेकिन ऑटो और एक्टिव चॉइस में हम लोग जैसे छोटे निवेशकों को क्या चूज करना चाहिए? और हम बस यही क्वेश्चन। जी देखिए, एनपीएस के अंदर आपके पास दो अकाउंट्स होते हैं, एक जैसे एक सेविंग्स अकाउंट है और दूसरा एक आपका पेंशन अकाउंट है, जिसके अंदर पेंशन के फंड्स आपके निवेश होते हैं मार्केट के अंदर। आप उसके अंदर एक एक्टिव मोड चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपनी निवेश की सीमा चुन सकते हैं, एक आप दूसरा मोड चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली आपके लिए चॉइस कर देगा कि किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। जब आप ऑटो मोड चूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ सीमित लेवल्स होते हैं जो वो स्पेसिफाई करता है कि कितना इक्विटी में देगा और कितना डेट में देगा और बाकी चीज़ों में देगा, और उसी के हिसाब से आपके रिटर्न्स डिटर्मिन होते हैं। That's right. Yeah, and Yamini, to talk about like the earlier caller spoke about the Santa rally as well. As far as Indian markets are concerned, you know, we have seen historic highs close to 72,000 level for the Sensex, and you know the Nifty crossing the 21,500 mark. From here on, especially in the new year, just a couple of days for the new year, how do you see the Indian markets panning out? Well, the Indian markets have been looking in terms of having a good rally. There have been historic highs that have been observed. There could be volatility with respect to the FII movements. Also, there could be in terms of the positive macroeconomic outlook that has been given by RBI or by the other agencies. Also, an indication that among the top G20 countries, it will be one of the fastest growing economies. Also, the fact that we have reached a forex reserves of 616 billion, these all have a positive impact on the market.
It will also depend upon how further the markets would take it in terms of its expectation of growth and development. If it looks at a faster pace of growth and development, there would be more signs of investment coming through. We have Ratnakar joining us from Mumbai, but before we take his phone call, it's time now for a quick break. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी लाइन पे हैं। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा सवाल है कि जो अभी दिसंबर महीना का एंड आ रहा है, तो जनरली दिसंबर में मार्केट तो डाउन ट्रेंड रहता है, यह तो चल रहा है, इसका रीजन क्या है? और दूसरा सवाल है कि आजकल मार्केट जब भी चालू रहता है तभी बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए स्ट्रेट लाइन यानी नो एनी मूवमेंट मार्केट स्ट्रेट रहता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक लाइन में रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाता है, उसका रीजन। थैंक यू। ओके जी, ये कहना कि दिसंबर मंथ के अंदर लो में जाता है या हाई में स्पेसिफिक जाता है, ऐसी कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई कि वो स्पेसिफिक टर्न ऑफ द ईयर में आपको बताए कि वो हाई जाएगा या लो जाएगा। बट ये ज़रूर देखा जाता है क्योंकि काफ़ी हद तक रिपोर्टिंग टाइम होता है जनवरी में एफआईआईज़ के लिए, तो वो प्रॉफिट्स बुक करते हैं। ये भी देखा गया है कि न्यू ईयर पे काफ़ी परचेजेस होती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट इज़। ये भी ख़ास तौर पे देखा जाता है क्योंकि दिसंबर का महीना है, एक फेस्टिव टाइम है, स्पेशली फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द इंटरनेशनल मार्केट्स। दे कैन बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी कमिंग provided they see that the valuations are not very high. As in the COVID period and as well as today, the Indian markets have been found by many people to be overvalued. So if they look and find that the markets are not so overvalued, they may invest further. Further, the global clues have been positive as the Fed has directed that it may go in for a softer regime for the interest rates. जहाँ तक 10 मिनट्स ब्रेक की बात है, मैंने नहीं देखा कि कोई स्पेसिफिक 10 मिनट्स ब्रेक हो, क्योंकि ट्रेडिंग कंटिन्यूसली चलती है और उसमें कोई ब्रेक नहीं आता। अगर कोई आपको स्पेसिफिक किसी पीरियड में नज़र आ रहा है तो हो सकता है कुछ स्टॉक्स में सर्किट फिल्टर्स लगे हों जिसमें ट्रेडिंग रोक दी जाती हो अगर वो ज़्यादा वॉलेटाइल हो। अदरवाइज ट्रेडिंग कभी भी मार्केट्स में ऐसे नहीं रोकी जाती। Let's move on and take our next caller. We have N.R. Prasad joining us from Bangalore. He's one of our regular callers. Good evening, Mr. Prasad, and welcome to Market Mantra. Hi, good evening, Rangapasham. Good evening, Ambarish. This is N.R. Prasad from Bangalore. Two questions, Mr. Sagarwal. My first question is, actually Bank Nifty fell down by 348 points on yesterday. Is it the right time to book profit in the banking sector? My second question is, would this banking sector perform well, maybe where it would stand by March 2024? Thank you. These are my two questions. Okay. Well, banking sector depends upon how fast it can actually give good credit and profits thereof. There has been a reported profits by the PSU banks and the other banks which have been very positive. There has been a lookout that in terms of the banks giving a lot of credit expansion during the past so many years. So overall the banks do indicate that there is a possibility of good growth in the future. Besides, there is a lot of investment that goes in the markets presently, whether it's in renewable energy or it's in infrastructure or in any other investment source. Since the macroeconomic outlook seems to be upbeat and even the international agencies have been looking at a positive outlook for India, the banking sector should be able to place itself well. Yeah, and Yamini, we are talking about the banking sector. Recently, the RBI is kind of, highlighting this fact that the personal loan segment has probably grown very fast and is kind of apprehensive that there shouldn't be any bubble build up in that.
There has been found that during the COVID period, there has been continuous credit expansion by the banks, and there has been a lot of expansion that has been done. And the COVID period has also affected the overall loan quality that has been there. Further, many recoveries have been due, which also get affected. But it depends upon the overall economic recovery process, which has been positive, and since it becomes the economy is one of the fastest growing economy and projected to grow at 6.3% in 23-24. Also, international agencies recognizing it among one of the fastest growing impactful economies. We do see that the banks should be able to do well. Yeah, and we have Animesh Bhattacharya joining us from Kolkata. Good evening and welcome to Market Mantra. Very good evening, sir. Yeah, go ahead, put your question. I have two questions. First question is, the share market has fallen. So, one should go in for long investment or one should make short-term investment at this juncture. And my second question is, how about this share market going to affect banking sector in the near future? Thank you, madam. Okay. So your first question is long-term versus short-term. It depends upon your goals. It also depends upon your risk appetite as to how far you're willing to take the risk. The markets are on a historic highs, and they can be both an upside and a downside towards it. Positive macro outlook goes for an upward trend, but since there can be profit booking and it is an overvalued market, there can be a downside to it as well. As far as long-term investments are concerned, it is always suggested that one looks at the fundamental values of the company while picking up these stocks, and look at the technical indicators for the entry and exit points in the market. For even short-term investments, it is always good if you are willing to take more risk and more active participation is inclined to, then one may go in for short-term investment. As far as banking sector is concerned, though the RBI supervises as to how much investment a bank makes towards the stock markets, they do affect the subsidiary incomes of the bank. So since most of the incomes come from the operational side, the stock market should directly not affect it unless they have not followed the supervisory goals that are there. And let's move on and take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening before we take more phone calls. Let's take a look at the American markets. US stocks gyrated to a mixed close on Friday as investors headed into the Christmas holiday weekend, having digested cooler than expected inflation data, which firmed bets for Federal Reserve interest rate cuts in the new year. All three indices turned less decisive in light trading as the afternoon progressed after an initial rally on data showing inflation is easing closer to the US central bank's target. The S&P 500 rose Friday after cooler inflation data, with the major averages registering an eighth straight winning week as Wall Street looked to extend its year-end rally. The broad market of S&P 500 gained 0.17%. The Nasdaq Composite rose by 0.19%, while the Dow Jones Industrial Average fell 0.05%. और इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु साहा जी हमसे जुड़ चुके हैं. अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. Good evening. I Atanu from Kolkata. Yeah. My first question is, when public start to think or use alternatives and alternative products? And my second question, how a small scheme turn into medium and then a big scheme? As an example, pension fund in India. Thank you. See, I understand your question is when can one look for alternative products. There are a large number of financial products available in the markets, and in the stock markets, which is the capital markets, you have the equity, you have the debt, you also have
the mutual funds. Also, you have short-term instruments like the commercial papers. You have government bonds. You have our government bonds in the capital markets that are there. Also, again in the alternative products, you have other products which the banks and the post offices offer, like the MIS scheme, Kisan Vikas Patra, NCC, and the others. Depending upon what is your goal and how much risk you're willing to take, and what is the liquidity you're willing to forego, you will decide upon the alternative products that are available in the market. It all depends upon what you wish to achieve from the particular financial investment, for how long do you want to remain invested, and what return are you looking for. As for a small, medium, or a long-term investment, one does go in for ranges. Usually pension funds are a long-term investment, and one looks at retirement to get the funds that are there, whether you go in for PPF, whether you go in for NPS, or any other employee fund that is there. Small, medium, and long again will depend upon the alternative choices that you have in terms of which age group you belong to and what are your objectives and goals for which you are investing. Right. Long term is higher, medium is shorter, and small is less than 1 year. जी, और यहाँ पर लेते हैं हम मार्केट मंत्र कार्यक्रम में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back. You're tuned in to the weekend edition of Market Mantra, and as you know, this is your program. You can participate in this program. You can put questions to our expert. We have two phone lines. Just to remind our phone lines are 23421050 and 23314444. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code. That's 011 before the numbers. And let's continue with phone calls. We have Vikas Mohataro joining us from Kolkata. Good evening, Vikas, and welcome to Market Mantra. Can I request you to please turn down the volume of your radio set? ओके, थैंक यू। नमस्ते मार्केट मंत्र। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। टायर सेक्टर, ईवी सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 साल का नजरिया है। आपने पहले दो सेक्टर्स कौन से बोले? टायर सेक्टर एंड ईवी ईवी सेक्टर और एआई सेक्टर का 10 साल। जी देखिए, तीनों सेक्टर्स अच्छे सेक्टर्स हैं। टायर सेक्टर काफ़ी टाइम से एक कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट रही है और इसमें कुछ ज़्यादा इनोवेशंस नहीं आई हैं, बट क्योंकि ऑटोमोबाइल्स काफ़ी हद तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉइसेस लेते हैं या इनोवेशंस लेते हैं, तो टायर सेक्टर एक अच्छा सेक्टर रहता है। पर इसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं मार्केट से बाहर भी जा चुकी हैं, तो इसमें कंपनी का निवेश आप जब भी करें तो उसके फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट को और बिजनेस ग्रोथ को देख करके करें। बट यामिनी इज टॉकिंग अबाउट टायर्स, वी आर सीइंग बोथ टू व्हीलर्स and passenger car segment growing by leaps and bounds, so that can surely have a reflection on tires and even other ancillaries. As I said, it's a conventional sector and there is a growth in the market in terms of the overall vehicles that are there. They do offer a choice, but again it depends upon the companies which are willing to change with the requirements that are there, because a lot of companies do die out if they don't innovate. As far as EV sector, there is a lot of push in terms of the climate change that has been given to the EV sector, and there is a positive outlook in terms of the EV sector growth. AI again is known as one of the sectors which in next 10 years is likely to run the entire market and the world, because it's primarily seen as changing the productivity and the technology with which we operate. So all the three sectors are good sectors. One is conventional and the other two are the new sectors. और मुंबई से हमारे श्रोता रवि लाइन पे हैं। रवि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मार्केट मंत्र की टीम। मुझे जानना था कि ऑल टाइम हाई मार्केट, तो क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए अगर मार्केट में एंटर करना है? दूसरा, प्रॉमिसिंग सेक्टर कौन कौन से हैं जिसमें 4 से 5 साल के आसपास अच्छा रिटर्न मिल सके?
Yes, Yamini. जी देखिए, ऑल टाइम हाई की स्ट्रैटेजी यही रहती है कि आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को चूज़ करें जो अंडर वैल्यूड हैं और जिनमें इंट्रिंसिक वर्थ है और ख़ास तौर पे एक प्रॉमिसिंग बिजनेस ग्रोथ है। ये भी देखा जाए कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना हो उसके अंदर और फास्ट पेस्ड मूवमेंट ना नज़र आए। मूवमेंट अच्छी बात है पर बहुत फास्ट पेस्ड मूवमेंट भी अच्छी बात नहीं होती। जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं उसमें ज़रूरी बात है आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है और आपका रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं। और जो आपके जो कंपनीज ज़्यादातर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगी उनका भी एक प्रॉमिसिंग एरिया रहेगा। And before we take more phone calls, let's take a look at the oil scenario. Crude oil prices eased on Friday ahead of the long Christmas holiday weekend on expectations that Angola could increase output after leaving OPEC, but rose for the week on positive US economic news and worries of Houthi ship attacks would boost supply costs. Brent futures fell 32 cents or 0.4% to settle at $79.07 per barrel, while US West Texas Intermediate crude fell 33 cents or 0.5% to settle at $73.56 when reports last came in. What would you say, Yamini, as far as oil prices are concerned, international crude oil prices, they have softened a lot in recent times. Can we expect to, benefit from them as far as our domestic scenario is concerned? Well, we import about 80% of the oil, so when the markets, especially for the crude oil markets, soften, they do add value in terms of reducing the effect of inflation, reducing inflation on the economy. Also in terms of the basic input raw material that is required for all workings. So it does have an advantage in pushing the economic activities. Yeah, I'm sure you will recall that, since May 2022, our domestic, petrol and diesel prices haven't been revised at all. So now moving ahead, if there is, a weakening of prices internationally, can we expect a downward revision as far as our prices are concerned? Well, the petrol and diesel prices were already made market determined, and they were expected to move up and down depending upon how the international crude oil prices move. But it is often seen when they increase, there is an increase, but when there is a decrease is not observed. So that should also take place on an automatic adjustment mode. Right. In some more news, the government on Friday clarified that the International Monetary Fund's case of India's debt touching 100% of the country's gross domestic product by the financial year 2028 is only a worst case scenario and not a fait accompli. Fait accompli is something that has already happened and has been decided before those affected hear about it, leaving them with no option but to accept it. In a detailed clarification, the government explained that among the various favorable and unfavorable scenarios listed by the IMF, like a once-in-a-century COVID-19, the government's debt could go up by 100% of GDP under adverse shocks. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। यामिनी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Domestic equity market snaps 7-week rally. Sensex sheds 0.52%, while Nifty is down by 107 points. In the US markets, Wall Street is counting on the Santa Claus rally to bring record highs. All three major indices notched their 8th positive week in a row. And oil prices ease ahead of the long Christmas holiday weekend. Brent crude falls 32 cents, while US West Texas Intermediate loses 0.5%. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.